Assalamu alaikum everyone. This is Ammaar bin Saleem. Welcome to the second episode of Out Loud with Ammaar. Those of you who have been watching my videos, as I've said in the previous webcast as well, कि I try to come up with content जिसमें लोगों को value मिल सके, जिसमें उनकी ज़िंदगी बेहतर हो सके. And I could not have found a better guest to feature on our show than Mr. Hamza Bhatti. So Hamza, right now he is a social media influencer. You all know him. He doesn't need any introduction, but still I'm gonna do that for the people who are in my profile. और थोड़ा बहुत फिर भी मैं बता दूं हमजा मुझे करना पड़ेगा. But Hamza is not just a social media influencer. He's also a digital consultant with the European Union. And that is a big thing, of course. And that is why we're going to be talking about Pakistan's digital future. So Hamza के साथ हम बात करेंगे opportunities के बारे में, issues के बारे में, challenges के बारे में, and what the youth should be doing right now so that they could profit and capitalize on the opportunities that exist right now, but profit in the future. So one of the reasons कि मैं हमजा को और बहुत सारे लोग जो मैं अक्सर हमजा को काफ़ी फॉलो करता हूँ एंड इनके अलावा भी काफ़ी ऐसे जो वो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि ऐड करते हैं वैल्यू उनको फॉलो करता हूँ. रीज़न सिर्फ एक है कि अपनी हर वीडियो में कोशिश करते हैं कि अगले की ज़िंदगी में कोई बेहतरी आ सके. और इनकी इलस्ट्रेशंस बड़ी मज़े की होती हैं, बड़ी सिंपल होती हैं, दे आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. And after this podcast, I'm going to seriously urge you to start following if you don't already do, which I really doubt. अगर आप नहीं करते तो please do go and watch his videos, and I'm sure by the end of the night, आप किसी एक बेहतर level पे होंगे. So Hamza, many thanks to you for joining us today. I know you are very busy. You are everywhere. We see you, but still, thank you very much for joining us today. थैंक यू सो मच अमार. और तुमने इतना जबरदस्त इंट्रोडक्शन करा दिया कि इसके बाद मेरे नहीं यार इसके बाद कोई मेरा इतना अच्छा इंट्रोडक्शन कभी करा पाएगा. बाहर हाइक कर दिया. No, exactly, yaar. And Budley, thank you so much for having me. And as you said, adding value to people's lives is like a passion right now for me. So I mean, I have honestly believe that it is something that when I obviously look around and when I see yaar कि बहुत very few people are doing this, but the fact कि अगर कोई बंदा भी कर रहा है तो I think the वो respect automatically इंसान के ज़हन में उसमें आती है कि because they're going out of the way and adding value to people's lives, which is unheard of in our YouTube and in the Facebook community. So yeah, thank you for having me, and I'm really hopeful that I'm going to enjoy this. I can assure you the pleasure is all mine and my audiences. But Hamza, at the same time, जहाँ पे मैं इस बारे में definitely आना चाहूँगा, जहाँ पे आपने बात की है कि कुछ लोग ही हैं जो कि वैल्यू वाली चीज़ क्रिएट कर रहे हैं, तो मैं इसके ऊपर मैं डेफिनेटली आऊँगा. बट बिफोर वी मूव ऑन टू द मोर सीरियस रीजन ऑफ आवर डिस्कशन के जहाँ पे हम डिजिटल के बारे में बात करें, डिजिटल फ्यूचर ऑफ द कंट्री के बारे में बात करें, कंपैरिजंस करें, आई वांट कि मेरी ऑडियंस को और हमें भी पता चले कि भाई व्हाट इज हमजाज लाइफ जर्नी. मतलब स्कूलिंग कैसी थी, कॉलेज कैसा था, यूनिवर्सिटी कैसी थी, कभी सोचा था कि भाई वीडियोस बनाना स्टार्ट कर देंगे एकदम से? यार इट्स फनी बिकॉज एक हम लोग एक मजे एग्जांपल वो यूज करते हैं कि जब इंसान के सर पे आती है ना तो बस फिर वो हर चीज करने के लिए तैयार हो जाता है. आई रिमेम्बर दिस वीडियो थिंग वाज, I mean, obviously when we were younger, YouTube actually हमारे सामने ही स्टार्ट हुआ, right? So अभी आजकल के बच्चे can't relate to that कि यार एक नई चीज स्टार्ट हुई and एक चीज ऑलरेडी बनी हुई. So I remember that I was obviously making videos, doing creative stuff was something that I always wanted to do. But here's the thing, दरम्यान में ना the main gap, there was a huge gap between what I wanted to do and what I was doing. और उसकी रीजन सिंपली ये थी यार कि मेरी स्कूलिंग थोड़ी सी मैं कभी भी नेम्स लेके लोगों को वो नहीं करता, लेकिन मेरी स्कूलिंग इस तरह की थी जिसमें like APS schools जिसमें आपको discipline and everything सिखाते हैं and all, but there was no creativity. ठीक है. And I since the beginning was always curious कि यार ये बंदे ने ये कैसे किया, ये बंदे ने ये कैसे किया. So like while growing up, I remember university में आके ना eventually वो एकदम से हुआ कि यार what अब करना पड़ेगा क्योंकि अब तो social acceptance भी चाहिए. ठीक है. तो वो social acceptance is one thing, लेकिन वही वाली बात है कि eventually the first semester में I remember distinctly remember कि so we were supposed to do presentations and all, right? मेरे BBA का first semester चला था. This is back in 2012. So and BBA was from BBA was from Bahria University. Exactly. So हुआ ये कि फर्स्ट सेमेस्टर का जो है इंग्लिश का प्रोजेक्ट आ गया और टीचर जो हमारे थे उन्होंने कहा कि जी आपने
वीडियो बनानी है। मैंने कहा वीडियो बनानी है, इंग्लिश के प्रोजेक्ट में वीडियो कैसे बन सकती है? तो वहां से दिस जर्नी लिटिल दिस अब उसमें प्रॉब्लम ये हुआ सबसे बड़ा कि हम अब वीडियो तो बनानी थी, चलो एक्टिंग तो हम टूटी फूटी कर लेते, ठीक है, और टूटी फूटी जो है हम लिख भी लेते और अपने फोन से बना भी लेते, अब उसे एडिट कौन करता? तो वहां पे जो है ना हमजा साहब पे डाल दिया कि जी कि वो जो चार ग्रुप के लोगों का चार जो ग्रुप में लोग होते हैं उनमें से हमजा एडिटिंग करेगा। अब मुझे एडिटिंग के बारे में कुछ पता भी नहीं था, तो मैं बिलीव मी व्हेन आई टेल यू मैर, सो आई लाइक ठीक है ओके, यू नो व्हाट, अब मैं या तो किसी को पकड़ाऊं आई हैड नो आइडिया हाउ टू, ऑब्वियसली किसको दूं ये वो, या मैं खुद सीख लूं। तो वहां से मैं बैठा 2 डेज में आई वॉच्ड 48 एपिसोड्स, एक पूरा यूट्यूब की सीरीज थी जिसमें एडिटिंग सीखने का था ऑन सोनी वेगस प्रो यूज करते, और मैंने 2 दिन में बैठ के पूरा का पूरा देख डाला। उससे क्या हुआ कि मुझे बेसिक्स, मतलब ऑब्वियसली एक साथ सारी समझ आना आती, लेकिन एक साथ मुझे एटलीस्ट ये समझ आ गया कि क्या है। एंड देन यू नो द एडिटिंग थिंग स्टार्टेड एंड इवेंचुअली इट went towards यूनिवर्सिटी से। जब मैं ग्रेजुएट हुआ तो उसके दरमियान जितने प्रोजेक्ट्स थे वो यूनिवर्सिटी के लोगों के मैं करता था। वहां से करते कराते हम बस एकदम से आया यूनिवर्सिटी के बाद, खैर अब तो कुछ करना पड़ेगा, अब तो अगर कुछ आता है तो शौक भी था, तो वी स्टार्टेड लिटिल फेसबुक पेज, और बस अब आपके सामने बैठे हैं एडिटिंग करते करते इवेंचुअली एक वीडियो बनाई ट्रैवल की, और वहां से द जर्नी स्टार्टेड ट्रैवल की। बिल्कुल। तो हमजा कभी ये नहीं आया कि यार मतलब मैं जॉब कर लूं अपनी ग्रेजुएशन के बाद, या शुरू से ही था कि नहीं यार मैंने तो इन्फ्लुएंसर ही बनना है, पता था आपको? Yeah, believe me, I swear to God, I wish I knew. I wish I knew कि वीडियोस बनाने से पैसे मिल सकते हैं। There was no such thing. There was no such thing as, because हमारे टाइम में जब obviously when we were graduating, the influencer scene पाकिस्तान में इस टाइम तक स्टार्ट नहीं हुआ था, ठीक है। कुछ क्रिएटर्स obviously थे, but like मुजम्मिल हसन ज़ैदी and that was back in that 2016 15 sorry 15, मतलब वो तो पॉडकास्ट कल्चर तो अभी आया ही नहीं था ना। नहीं कोई चक्कर ही नहीं था यार। तो अब वो क्या था कि उस टाइम में मुझे उतने दिन में आइडिया नहीं था यार कि आगे जाके क्या करेंगे। उस टाइम तो हमारे लिए द होली ग्रेल बस के भाई टेलेनॉर कि मेरा मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव लगना है, दिस विल बी द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ माय लाइफ। तो और यू नो व्हेन यू लुक बैक एट थिंग्स आप बड़े हैरान होते हो। बट एनीवेज सो उस टाइम में क्रिएटिंग वीडियोस एज अ प्रोफेशन वुड नेवर हैव क्रॉस्ड माय माइंड। But it was something that as I said कि when I made my first ever video, मैं थोड़ा सा उसको बताता हूँ कि it was a very random वो ना कि एक टाइम मुझे मौका मिला स्कर्दू जाने का, and I got back with some few clips, and मैंने WhatsApp पे लोगों को भेजे, तो उनका भैया बड़े अच्छे हैं, I made a video and in the first like week or 3 days it did 25-20,000 views, and that was from my personal profile। उस जमाने में 2015 में 20,000 views आ जाना was something, मतलब जहाँ पे जब 400-500 दोस्त भी नहीं होते होंगे प्रोफाइल में। Exactly। तो वहां पे ना मुझे हुआ कि यार मे बी तेरे अंदर कुछ चीज है जो तू सही कर ही रहा है। So that's where exactly that is where I started, but here's the problem। उस टाइम पे भी मेरा गोल तो यही था यार कि I need to go into that corporate system where I obviously need to grind and climb up the ladder। So for the next 3.5-4 years I was doing proper corporate stuff। लेकिन उसके दरम्यान में in 2017 I distinctly remember यार कि यूफोन में I was working as a quality executive। So now I went to the same travel करने गया, तो वापस आया तो वीडियो बना के ना मैंने एक लोगों को दिखाई वहां पे अपने ऑफिस में लोगों को, and the reaction, फर्स्ट बंदे का रिएक्शन कहता है यार तू इधर बैठ के कर क्या रहा है, you don't belong there। So मुझे ना constantly reassurances मिलती रही यार कि हमजा what you can go there, but here's the thing, कोई बात है कि इंसान अपने आप को हमेशा वही करता रहता नहीं यार मैं नहीं कर सकता, लेकिन on the back of my head ना it was always pinching me यार कि क्यों नहीं ये करने का। So well eventually यार खुदा का करना हुआ, eventually जो है this European Union competition happened, ठीक है, और वहां से चेंज्ड एवरीथिंग फॉर मी। सो या ओके, जबरदस्त। मतलब यानी काफी ऊपर नीचे की जर्नी है जिसमें कॉर्पोरेट का टच भी है। पूरा सर बिल्कुल 3-4 साल फुल मजदूरी के। फुल मजदूरी। अच्छा हमजा, एक चीज जो मैं जिसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ जानने में, खासतौर से आपसे, वो ये कि जब आप अपनी पहली वीडियो बना रहे थे, जब आपने एक तो हो गया ना ट्रैवल लॉग्स, ठीक है, उसके अलावा जब आपने पहली दफा आपने कहा आई एम गोना फीचर माय ओन सेल्फ, Yes। तो
एट दैट टाइम आपको कोई एप्रीहेंशंस थे, कोई खौफ था कि यार मेरे अपने लोग, जैसे मतलब अक्सर यहाँ पे जो मैंने देखा है बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, देयर इज अ Yeah, लॉट ऑफ टैलेंटेड पीपल, मतलब वो तो कमी है yeah, ही नहीं, लेकिन yeah, उनको खौफ ये है कि लोग क्या कहेंगे। तो yeah. कभी ये चीज आप में आई, और अगर आई तो फिर कैसे एड्रेस किया? I'll be honest with you, Amar, this the लोग क्या कहेंगे thing, हर इंसान की ना पर्सनालिटी भी गेस थोड़ी सी होती है जिसमें दे, मेरी पर्सनालिटी फ्रॉम द स्टार्ट, बिलीव मी, बहरिया यूनिवर्सिटी में आई वाज द ओनली वन, बिलीव मी, लोगों से जाके भी पूछें दे विल टेल यू, आई यूज्ड टू वेयर an orange shirt, an orange backpack, and an orange shoes. जब पूरी यूनिवर्सिटी काले कपड़े पहनती थी, ठीक है? So and you know what? I for I when I look back at it, I honestly feel कि I feel so blessed, क्योंकि बात ये यार कि शुरू से ना मुझे ये था यार कि मुझे पता था कि मैं कौन हूँ. I did not want, I never wanted to pretend कि यार I want to be this person. So for Hamza Bhatti, since day one was Hamza Bhatti. He never thought कि अच्छा I could be this one, could be this, could be that. And मेरे अंदर एक अजीब सा सेल्फ कॉन्फिडेंस था कि यार मैं अगर करने जा रहा हूँ ना, ठीक है, तो मैं करूंगा, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ दुनिया क्या कहे. एंड आई थिंक दैट इज समथिंग जो कि दैट इज अ ह्यूज ब्लेसिंग. ये बहुत कम लोगों के अंदर होती है. जो फेयर जहाँ तक बात है मेरे, एंड इट्स प्रॉब्ली बिकॉज हाउ माय पेरेंट्स ब्रॉट मी अप. they instilled this self confidence के यार हाँ तूने जो करना है जाके बेटा, तू जो चाहे जाके कर ले. And that helped me a lot. But when you, जब आप the first, I remember making my first video, I just kind of, I was glad कि I was able to put that out. You know, लोगों को होगा यार नहीं क्या लोग सोच रहे होंगे, I was like कि हाँ भाई मैंने finally अपनी पहली वीडियो बना ली है. So that was what I was thinking. So it's pretty different as you would normally get from other people. यानी कि मतलब ठीक है, इसमें सिर्फ ये भी नहीं है कि मतलब इट वाज जस्ट यू, इट वाज आल्सो द होल थिंग दैट वाज गोइंग ऑन एट द बैक. पूरे पेरेंट्स की पूरी ट्रेनिंग थी, कॉन्फिडेंस की, बहुत ज्यादा हैविंग फेथ इन यू. तो मतलब यू से कि उसका भी एक रोल है. बिल्कुल. और when I look around ना, exactly, वो that is probably one of the reasons. वरना if I were anyone else, I feel like this, you know, this लोग क्या कहेंगे thing, like I get thousands of, have had literally thousands of people have sent me these messages कि यार हम करना चाहते हैं but we are just afraid because you know what, if we do this, society हमें क्या accept नहीं करेगी या society हमें क्या कहेगी. And you know what, वही वाली बात है कि जब तक if you're afraid of putting yourself out there, no one's gonna really know what you're really made of, what you're really capable Exactly. of. 100% true. बिल्कुल सही. अच्छा Hamza, while we're talking about the family and the role that family has to play, we all belong to brown families. तो वो एक खास culture जो है हमारे यहाँ पे चलता है. And I mean, so many people look up to you as well. I'm sure so many people come into discussions with you, as you have been mentioning कि यार मेरे पास कितने सारे लोगों के messages आते हैं, वो अपनी apprehensions share करते हैं, अपने doubts करते हैं share. एक कल्चर जो मैंने नोटिस किया है हमारे, अच्छा ये सिर्फ पाकिस्तान की बात भी नहीं है, इट्स मतलब इट कैन बी सीन अक्रॉस साउथ एशिया, कंपैरिजन का, और जो कि मतलब घरों से ही रिजनेट होता है, जहाँ पे कभी कभी पेरेंट्स जो हैं वो एक बच्चे को इन द वेरी अर्ली वेरी फॉर्मेटिव ईयर्स मतलब कंपेयर करते हैं उसको उसके कजन्स के साथ, उसकी परफॉर्मेंस को उसके दोस्तों के साथ. तो डू यू थिंक कि दैट काइंड ऑफ पुट्स अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन द अपब्रिंगिंग ऑफ दैट चाइल्ड, या what are your opinions on that? And you know what, I think that is the cancer of our society. ठीक है, because I feel like कि that, मैं बताऊं क्या, आप कभी भी when you're young ना, you're obviously trying to figure yourself out. The first biggest task that you have, you know, at that time is कि यार मैं कौन, ठीक है, who am I, like, you know, who am I really. And before even you have done that, if when you look around and with the comparisons with the cousins, the comparison with your friends, the comparison with your मोहल्ले के बच्चे के इतने मार्क्स आए हैं, ठीक है, it is something that I swear to God when I think about it, ये एक ऐसी चीज है जो कि आप ऑब्वियसली एक तो सेल्फ डाउट इंसान को खा जाता है. ये सिर्फ ये चीज यार कि मे बी यू नो व्हाट, इफ आई, अगर उसके इतने आ रहे हैं तो मेरे अंदर कमी क्या है, यू नो, आप अपने आप को हमेशा सेल्फ डाउट करते रहते हो. And I remember I was like, to be honest, when it comes to education, I wasn't the brightest. ठीक है, like I was the very वो, और मुझे ये चीज आपने जरा ना टाइम लेके बताइए. हाँ नहीं exactly, I have to, exactly, क्योंकि देखो वही बात है यार कि एक ऐसी चीज है which in a way ना, if I ever doubted myself now, that was because of my कि मेरे grades किस तरह के थे, ठीक है, अच्छा यार मे बी मेरे grades इस तरह के नहीं है तो मे बी यू नो व्हाट आई एम नॉट. And I've been
Unfortunately, I will remember बड़ा वो clearly कि there were almost 2 to 3 times जब मुझे मेरे teachers ने कहा कि तू कुछ नहीं कर पाएगा. Literally, like this were their words. तुम नहीं कुछ बन पाओगे. And you know what? That fueled a fire. That fueled a fire inside me कि हाँ, ये तुम लोगों ने कहा ना, now I'm going to prove you wrong. Now I'm going to prove you wrong. Yes. That was मेरी vengeance was I swear to God. लेकिन but here's the thing now. It's only कि यार आप उसको किस तरह लेते हो. There are obviously a few people who totally के बस भाई मुझे तो उसने कह दिया वो बिल्कुल वो. लेकिन as I said कि the way I was brought up, तो वो ना उसके अंदर थोड़ा डिफरेंस ये था यार कि instead of taking this कि यार हाँ बिल्कुल मैं back out कर जाऊँ, I was taking that as a challenge. But when I look around for other people, I think it's very unfair, and I can't imagine living in a society where even when my kids, I'm never going to allow them. I'm never going to let them compare themselves with anyone or make them उनको को नहीं भाई तुम्हारा दोस्त ऐसा है तुम्हारा cousin ऐसा है, because I would never. I would never. मतलब each person मतलब is his own person ना, मतलब सबके अपने अपने talents हैं. Exactly. मतलब of course मतलब जैसे आप बता रहे हो कि जो जिन्होंने आपको आपके teachers ने आपको कहा कि मतलब who discouraged you it मतलब to put it out right. In some way, and then matlab today they are the ones who might be watching your videos. they do, yeah, they do. That's why I make them. That's why you make them. Okay, Hamza, now I mean coming back to what we promised our audience that we'll be talking about. अच्छा, digital की जहाँ तक बात करते हैं, I'm just going to start off with a very straightforward but a very rigid question as well. Okay, what in your opinion are some of the most significant challenges or issues that we are facing as a society owing to the use of mobiles or social media? Yeah, matlab, and while we're at it, do you think that at the end of the day are we in a net benefit situation या हम net loss situation में? क्योंकि जब मैं इस किस्म के stats सुनता हूँ ना कि दुनिया में सबसे कम जो attention span है वो jellyfish का था और इंसानों का उससे भी कम चला गया. And then there is this documentary that I watched कि जिन्होंने बताया कि ये जो Facebook और इन सब के इंटरफेस वगैरह जो ये scroll up हम करते हैं ऊपर वो इसलिए because I mean it's easy to move our thumb upside down. ठीक है. तो do you think कि मतलब इतनी सारी research but लेकिन at the end of the day are we in a net loss situation या net benefit है? Ammaar, you know what? थोड़ा सा पीछे से लेके चलते हैं कि how this started. Back in 2006-5 जब Facebook and all हुआ, जब हमें नया मुझे तो almost 2007-8 में जाके हुआ कि यार हाँ Facebook भी कोई चीज़ है. At that time, social media started off, it was अच्छा भाई मैं फलाना मेरा दोस्त पुराना 10 साल के वो कराची में रहता है तो मैं देखना चाहता हूँ कि वो आजकल क्या कर रहा है, ठीक है, वो पिक्चर्स लगा रहे हैं. It was totally friendship based कि यार हाँ मेरे दोस्त ये वो क्या कर रहे हैं, ठीक है. But the fact is कि obviously who knew कि एक टाइम ऐसा आएगा that this would become a juggernaut, like one of the biggest social media is the biggest इस टाइम पे जहाँ तक influence की बात है लोगों के ऊपर. So we never saw it coming. That's the biggest problem. They were obviously tinkering with the algorithms. They were always they obviously wanted to make money out of it. What do you think? You may get 1 billion, 2 billion people on your platform and they won't obviously make money. They wouldn't. Obviously they had to. लेकिन वही बात है कि अब आके जब when we look around and जब मैं देखता हूँ personally how it has affected me, my attention span had gone to, मतलब मैं क्या कहूँ, और वो ये था कि यार you're basically doing, I call it the digital tawaf. Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat. ठीक है, so doing that tawaf all the time. All the time, I tell you. मैं बताऊं अमार, Instagram और Facebook मेरे फोन पे नहीं है, by the way. मेरे फोन पे Facebook, Instagram नहीं है. मैं इसे जब स्पेसिफिकली मैंने टाइम रखा होता है, मैं डिलीट करता हूँ Facebook, Instagram, जब मैंने यूज करना हो मैं इंस्टॉल करता हूँ ताकि that happens every day. It happens every time that I need to put on stories या anything. मैंने जो वीडियोस पोस्ट करनी होती हैं वो मैं अपने कंप्यूटर से अपलोड करता हूँ. मैं मैं लिटरली इंस्टाग्राम आपको या स्नैपचैट डिलीट किया एंड ऑल, फेसबुक डिलीट किया क्योंकि आप बैठ जाओ 15 मिनट 30 मिनट 1 घंटा किस तरह गुजरेगा आपको पता नहीं चलेगा. So it has ruined our कोई हमारा दूर तक के कुछ देर फोकस आप नहीं कर सकते. आप 5 मिनट किसी को कहीं बैठ के कुछ लिखे, they can't write anything because the fact is यार कि हम लोग इतना स्टिमुलेट हो चुके हैं of just
continuously browsing. We want to get that hit of dopamine every time. Everyone, we want a hit of dopamine every 5 seconds. Every time. फोन रखा, कुछ नहीं कर, चलो जी. So that has made our brain, वो इतना बुरी तरह हमें अफेक्ट कर चुका है कि नाउ हम बेसिक चीजों पे फोकस नहीं कर सकते. वी गो आउट, दरवाजे से बाहर निकले, याद नहीं है क्या बाहर लेने, पानी पीने निकले थे, ये भी याद नहीं पानी पीने निकले थे. सो आई थिंक इट इज अ टोटल नेट लॉस से भी कहीं ज्यादा बुरा चल रहा है, स्पेशली वो लोग जो कि रियलाइज नहीं करते, बच्चे, ठीक है, टीनेजर्स. And now, you know, when we saw that Facebook leaks and how it's affecting young girls with Yeah. you know, increased suicide rates, shocking I tell you. तो हमसे लेकिन फिर इसकी रीजन क्या है? मतलब हमें ये इतनी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है इसकी रीजन, या एडिक्शन है? क्या रीजन है कि यार हम लोग छोड़ नहीं सकते? और आपकी बात सही है, हम जहाँ बैठ जाएं और साथ हमारा कोई दोस्त भी बैठा हो, बट इफ वी हैव गॉट एन एप्लीकेशन लाइक फेसबुक व्हिच यू डोंट हैव बाय द वे ऑन योर फोन, तो फिर तो 15 मिनट तो गए, एंड 15 मिनट कैन लीड टू हाफ एन आवर, एंड बिफोर यू नो इट 1 hour इज गॉन. एंड वो मेरा फोन भी मुझे ये रोज बता रहा होता है तकरीबन कि दिस वीक यू स्पेंट लाइक हाउ मेनी आवर्स, या दिस मतलब every day you're spending on average like 4 to 5 hours on screen, and that is unbelievable. Yeah. यार, हम as humans ना, we want to feel appreciated, we want to feel, वो यार instant gratification वाली चीज है. 1 लाइक आया, 2 लाइक, 5 लाइक, 10, 50, कितने लाइक्स आते हैं, you know, it's मतलब आपकी वो gratification का एक टूल बन चुका है, ठीक है, कि यार हाँ, इससे इतने आएंगे तो मैं इतना खुश हूँ, मेरे 100 लाइक्स है तो मैं इतना खुश हूँ, मेरे 200 लाइक्स है तो मैं इतना खुश हूँ. ये जो चीज है ना, it has literally destroyed the basic fabric of society. क्योंकि क्या है कि यार ये चीज, एक जमाना क्या था, आप पूरा साल मेहनत करते थे, पूरा साल मेहनत करके एंड में रिजल्ट आता था, तो तब आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मिला करता था, ठीक है. आजकल जो है ना, लास्ट प्लेस फिनिश करते हैं, उसको भी ट्रॉफी देते हैं, उसको भी दे देते हैं, ठीक है. So now this is the new world where everyone wants कि यार हमें बस, हम कुछ भी ना कर रहे हैं, हम कुछ, we're not making anything creative, we're not helping out the society, हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम बस कुछ अपने मुंह के तस्वीर लगा दें तो लोग हमें हमारी तारीफों के पुल बांधने आ जाएं. And I think it is the way social media operates. I can't believe I'm still here. Like, you know, I mean, that's the problem, right? That's the problem. You would feel वो यार कि ये बंदा जो कि इसने पूरी अपनी एम्पायर इस पे बनाई है, ठीक है, why would he say something like this? But when I tell you this, when I look at other people, so this is why, Ammaar, this is why मेरा content different है. मैं कहता हूँ यार, I'm literally saying this on camera, I want to be the lesser evil. मैं जो बात बना रहा हूँ, ठीक है, मैं जो चीज़ बता रहा हूँ, वो उन लोगों को वो बातें बता रहा हूँ which are जो जिंदगी से रिलेटेड है, जो कि पर्सनल स्ट्रगल से रिलेटेड हैं, ताकि यू नो व्हाट, कि यार वो ही बच्चे जो कि इस टाइम पे आर आइदर एडिक्टेड, आर आइदर सुसाइडल, आर आइदर एंग्शियस, उनको ये हो यार कि हाँ, देयर इज होप, हाँ, दिस इज नॉट इट जस्ट बिकॉज कि यार सोशल मीडिया तो चलो एक चीज़ है, लेकिन हमारी जिंदगी में और बहुत से और डिफरेंट मसले हैं, मे बी वो टैकल हो जाए, मे बी, यू नो, उससे थोड़ा सा उनको हेल्प हो जाए. एंड सो दिस इज माई टेक on, you know, obviously making content and all, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को help out हो सके, because we can't stop the social media curse that we have on ourselves right now. वही है ना, it's like जैसे गूगल के बारे में कहा, it's like a mountain, मतलब you can climb it but you cannot move it, it's gonna be there. और मुझे आपकी बात से ना वो इरफान जुनेजो की भी याद आ गए. उनकी भी जब कम बैक वीडियो मैंने देखी, वो भी यही बात है, it's kind of a vicious circle. तो मतलब आप कभी 1 लाख सब्सक्राइबर पे जाओगे, फिर 2 पे जाओगे, फिर यू गोना वांट लाइक 5 लाख हो जाए, 10 लाख हो जाए, इट्स गोना कंटिन्यू. वही ना, मतलब नेवर एंडिंग किस्म का साइकिल है. अच्छा हमजा, ये फील होता है कि यार, एक तो बात करी ना हमने एडिक्शन की, ये फील होता है कि कॉर्पोरेट लेवल पे हमने बहुत ज्यादा ही पावर दे दी कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट को, कंपनीज लाइक एप्पल को, कंपनीज लाइक, आई मीन, ये जो फेसबुक वगैरह, इंस्टाग्राम वगैरह, कि देखा मतलब थोड़ी देर का ब्लैकआउट हुआ 2-3 दिन पहले, एंड we didn't know हमने क्या करना है, ठीक है. एंड व्हेन जब मार्क ज़करबर्ग ने अपना फेसबुक पे पोस्ट भी डाली, आई डोंट नो इफ यू फील द सेम वे, बट मुझे लगा कि दो ही वाज saying he was sorry, but he was actually unapologetic. We know how much you rely on our services, but what is this way of dealing with your consumers? यार मतलब ये क्या बात? You know what, it's about them knowing
more than what you know about yourself. ठीक है? Like for example, Bullseye. they know you more than you know yourself, and they know what you want before you know what you want. Absolutely. It is, I mean, it's like magic. You know what? If अगर वो कहते हैं ना जादू काला जादू क्या होता है, this is the purest form of that. Because you know what? And we have obviously, as I said, Ammaar, we never saw this coming. It हमें slow से just like it's like slow poison. हमें slowly हमें बताता है अच्छा नया feature ये आ गया. अच्छा जी, now you can do make videos. पहले Facebook had no videos, by the way, when we started. There was no such thing कि आप Facebook की पे अपनी videos लगा के upload करो. सही. So slowly and gradually they were able to build this. And मुझे obviously ये feel होता है यार कि these corporate giants they don't really care. They why would they care? All they have to do, all they really care about कि यार उनका अपना personal interest कितने, how much revenue they're bringing in, how many more people are coming in. Ammaar, can you hear me? Yeah. So I'm just saying, exactly. So I'm just saying कि यार जब अब when you look around तो हर social media apps इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं, like there are like hundreds and thousands of probably जो मुझे आज तक पता भी नहीं है. So I think यार इनकी I would not expect them to be responsible because now they are bigger than governments and countries themselves. ठीक है? They are bigger than governments. Facebook is, if it was a country, they would probably be the biggest country in the world, right? Right? सही है? So Agreed. The amount of influence they have, the amount of power they have, and the amount of money they have. Look at Amazon, look at Facebook, look at all of these guys. So I think now the world is in their hands. And I think Hamza इसकी main reason ये because as you've mentioned कि they know more about us than we know, और उसका मतलब ये कि मतलब जो उसका preamble है, जो उसकी basis है, वो है data. Yeah. And as a country, मेरा ख्याल है we are the मतलब least focused on data. Yeah. और शायद ये आपको भी फेस होती होगी प्रॉब्लम बिकॉज यू हैव बीन डीलिंग विद यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशंस, यूरोपियन कंट्रीज. तो कभी आपको फील हुआ है कि पाकिस्तान जो मार खा रहा है उसमें डेटा कलेक्ट ना करने का, होमवर्क ना करना एक बहुत बड़ा रीजन है? यार हम लोग तो शुरू से you know the when I think about it, obviously we were never able to adapt. हम कभी adapt नहीं कर पाए. हम लोग देखो हम लोग for the longest time आपको याद होगा यार जब अजान देने के लिए वो लाउड स्पीकर वाला कॉन्सेप्ट आया था, लोग कहते यार ये हराम है अगर आप लाउड स्पीकर में अजान दोगे. लाइक you know what, I mean this is where you come from. So fact is कि the fact that we weren't able to take these अभी क्यों, why is it कि हमारे यहाँ Facebook का कोई वो नहीं है, ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन नहीं है हमारे पास, क्यों YouTube पे ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन नहीं है? इतनी बड़ी चीज हो कि अगर गवर्नमेंट ये नहीं इन चीजों को अभी तक केटर नहीं कर पाई, ठीक है, और हर अगले दिन कोई ऐप ब्लॉक हुई भी होती है. द फैक्ट इज यार कि एज अ कंट्री हम लोग आई फील कि वी आर 50 years behind. Like we're always trying to play catch up with other countries. उसकी रीजन क्या है? Instead of actually bringing something, instead of saying हाँ यार we're going to be the first ones in doing this, we're going to say हाँ भाई आप सारे पहले कर लें, फिर हम एंड में आएंगे आराम से तशरीफ लेके, फिर हम कॉपी कर लेंगे ना, हम कॉपी कर लेंगे, और वो भी ऐसा करेंगे कि वो लिटरली जो है दिखाने के काबिल ना हो. सो आई थिंक मैं कुछ दिन पहले मैं जुनैद अकरम को भी बहुत शौक से सुनता हूँ. उनके जो आस्क तंजीब स्वैग की सीरीज है उसमें अकबर चौधरी के साथ उस दिन उनका एक पॉडकास्ट ही था, जुनैद अकरम रिएक्ट्स के साथ. उसमें उन्होंने एक कोई वीडियो निकाली एंड दैट वाज रिकॉर्डेड इन 80s और 90s, 92, या एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 92. और उसमें वो सऊदी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को एक कमीशन किया था कि एक आपने जो है ना हमारे लिए एक वो जो एक सॉन्ग्स नहीं होते जो आपने बनाना है हमारे लिए, शोइंग के किंग साउद जो है, किंग फहद जो है, वो क्या क्या काम कर रहे हैं, ऑल ऑफ दैट. एंड उसमें भी वो यही बात कर रहे थे कि भाई जिस किस्म का काम पाकिस्तान ने कर दिया है वो शायद उन्होंने ले तो लिया होगा लेकिन उसको डिस्ट्रॉय कर दी होंगी सारी कॉपीज उसकी. तो खैर हमजा थोड़ा सा जरा साइड पे ले जाते हैं डिस्कशन को. कभी दिल में ये आया कि यार पाकिस्तान छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, यहाँ तो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं ही नहीं, और मतलब ये यूथ का आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, अक्सर लोगों से मिलते हैं, उनका सबसे पहला ये होता है कि यार पाकिस्तान से बाहर जाके काम करेंगे, वहाँ पे हालात बहुत अच्छे हैं पाकिस्तान में, जब फिर डॉलर्स लेके आएंगे, रियाल लेके आएंगे और जिंदगी यहाँ बेहतर हो जाए. कभी ऐसा ख्याल आया यार? अमर, you know what, especially being a digital guy जो सारा का सारा काम ही इसके गिर्द घूमता है, and जब मुझे छोटी छोटी चीज़ों पे I get वो ना कि यार
Amazon नहीं है, कैमरा की कोई चीज टूट गई, अच्छा जी अब वो इतना सा पुर्जा लेना है, ये पुर्जा लेना है, अब वो आपको अमेरिका से मंगवाना पड़ रहा है, फिर आप ना रो रहे होते हो, आप कह रहे होते हो यार, बिकॉज यू नो व्हाट एंड द फैक्ट इज, देखो ना हमारा इकोनॉमिकली हम इतने स्ट्रांग हैं, ना बाइंग पावर है हमारे पास, देन एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू, आई मीन जो चीज बाहर लेट्स से $1,000 की है, वो पाकिस्तान में आते आते हमें $1,200-1,300 की पड़ रही है, $1,500 की पड़ रही है. I mean, dude, we're literally at, if you talk about वो चीज, तो we're at literally at the worst place that you could potentially be. ठीक है? Yep. But on the flip side, मैं जब देखता हूँ, अमर, in a way ना, I kind of feel कि it's, and I don't want to offend anyone, but it is so much easier to make it in Pakistan as compared to if you were outside in any other country. Okay. You know what? अब मैं बताऊँ, मैं अपने आप को कंपेयर करूँ, I mean like now if I have 200,000 followers almost in total, तो if I were in the US, if I were in the UK, no, मेरे लिए इतना आसान ना होता, because you know the competition, the people never think about this यार, कि बाहर competition कितना ज़्यादा है, कितना कटथ्रोट, कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है. बट हाँ, एक और बात है ना, आप सोसाइटी में जाके आपको फिर ये भी फील होना चाहिए यार, हाँ इस लेवल की मेहनत की जा सकती है. हमारे यहाँ तो कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है. हमारे यहाँ तो भाई पूरा दिन आप आराम से बैठे रहो. I look around, believe me, and when I look around and when I see people who were with me in my university, college and all, and grade wise they were like, they were hardworking people and they were also doing very well. When I see, मैं आज का देता हूँ, they are nowhere to be found. They're nowhere, because you know, here's the thing, Ammaar, people just take it for granted ना यार, हाँ बस हमने कर लिया है, अब easy हो जाओ. ठीक है. एक चीज हमारे हम पाकिस्तान में लोगों के लिए के अंदर है, देयर आर वेरी फ्यू पीपल, स्पेशली इस्लामाबाद तो बिल्कुल ही ठंडा है ना, कि दे वुड रियली गो आउट, हां दे वुड रियली गो आउट एंड से कि नहीं. मैं बताता नहीं हूं, हमजा ने मुझे लाहौरियों के बारे में अभी क्या बात की है, लेकिन सो यू नो, for me enough is not enough, right? Enough is you not can enough. always do more. You can always do more, believe me. Now the fact that I'm working with the European Union, I would say कि हाँ भाई पैसे आ रहे हैं, आराम से साइड पे बैठो, कुछ दिन रिमोट वर्क होता है, आराम से बैठ के काम करो, सुकून करो. मेरा दिमाग खराब है कि मैं बैठ के वीडियोस बना रहा हूँ यार. सो आई फील लाइक यार कि बाहर जाने में, देखो बाहर जाना is a huge opportunity. Obviously, you know, if I अब I wouldn't go, लेकिन if you had given me this chance, like you know when I was starting out, and जब मैं एक साल अपना इधर गुजारा था, और when I would have, जब मैं देखा था यार कि आगे पीछे क्या हो रहा है, anyone, I would not say one person जिसके अब्बा की बुरी यहाँ पे जायदाद ना हो, तो उसके अलावा जो है ना, no one is going to stay here. So for me personally, मेरे लिए सिर्फ ये था यार कि I was like यार, जब मैंने रिस्पॉन्स देखना शुरू किया ना, I was like it is so much easier to make it here, because you know what, people don't really try that. There are very few, even if you look at creators, like content creators, there are very few like good ones. If you go out there and see यार कितने लोग एक्चुअली जो काम कर रहे हैं, compare yourself with India. मुझ जैसा बंदा शायद वहां पे 5,000 भी ना तक बना पहुंच पाए, इतना बंदा वहां पे बना रहा है. So you know what, this is how it's all about कि आप अपने आप को यहाँ पे रहते हुए आप आज स्टार्ट करो. Believe me, एक साल के अंदर you will be somewhere. ठीक है. आप किसी और कंट्री में हो, इतना आसान नहीं है. You will have to work 10 times harder to get to here. हमजा, आपकी बात से मुझे ना एहसास हुआ, वो इंडिया के गाना भी था, दुनिया में रहना है तो काम के और प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी. एंड दैट इज ट्रू. मतलब ठीक है, गाने में भी रियलिटी है कि अगर आपने जिंदा रहना है तो आपको काम करना, यू हैव टू मेक श्योर यू हैव एन इम्पैक्ट एवरीवेयर यू गो. क्योंकि अगर आप, जैसे वही बात है, वैल्यू नहीं जनरेट कर रहे, तो आपके फॉलोअर्स भी रिड्यूस हो जाएंगे, आपका इम्पैक्ट भी कम हो जाएगा, एंड ऑफ कोर्स जो आप अर्न कर रहे हो वो भी कम होना शुरू हो जाएगा. अच्छा हमजा, इसमें अब मतलब towards the end of the program, how do you think the digital media will evolve now? ठीक है, मतलब how will it change in Pakistan? मतलब we have talked about this कि we are spending a lot of time on Facebook, Instagram और TikTok, Twitter तो मेरा ख्याल है बहुत थोड़ी सी आवाम है जो Twitter पे जाती है, और मतलब लेकिन at the end of the day हम यही कहेंगे यार, we are a consumption oriented society. That's why we are importers as well. फिजिकल प्रोडक्ट्स में भी, और हम मतलब यहाँ पे भी कंज्यूम करते हैं अपने कंटेंट जो दूसरे हमारे लिए बनाते हैं. बट इट्स दिस टाइम कि दुनिया में चेंज आ रहा है ना. वी आर हियरिंग अबाउट NFTs और डिजिटल आर्ट. और आई वाज लिसनिंग टू गैरी वी द अदर डे एंड आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट द होल कांसेप्ट ऑफ NFTs इज, एंड ही वाज सेइंग अभी दुनिया में सिर्फ 2% लोगों ने इसको एक्सप्लोर किया. देयर आर स्टिल लाइक 98% लोग जिन्होंने अभी इसमें आना है.
Yeah. So do you think that this is one area, or maybe you could come up with your own ideas कि जहाँ पे हम यूथ अभी उसके अंदर एंटर हो जाए, ताकि यार मतलब 10 साल बाद हम भी कैसे यार पाकिस्तान ने शुक्र है उस टाइम पे ये कर लिया था, आज ये यहाँ पे हैं. Yeah, I think when I look at when I look at Pakistan, तो in the next 20 years ना obviously एक चीज तो हमें नजर आ रही है. अभी मैं LinkedIn पे देख रहा हूँ कि there's a lot of seed funding. अभी बाहर के organizations पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पैसे, अब आके उनको एहसास हो रहा है यार कि पाकिस्तान में market, it's a huge market, like you know what, लोगों को ये चीज अब आके realize हो रही है कि यार हाँ हम यहाँ पे we can make money. So something that I know is कि यार yes, in the next 20 years obviously I'm hopeful कि Amazon उस टाइम तक तो आ जाएगा होगा, but we will see much, you know, ये सारी bigger companies come here. They have to come here. It's in their own interest. Pakistan को तो छोड़ो, it's their own, in their own interest. So obviously indirectly it helps Pakistan. लेकिन मैं ये देखता हूँ यार कि इस टाइम में रहते हुए yes, just because e-commerce is एक ऐसी चीज है कि businesses evolve अच्छे खासे हो चुके हैं, ठीक है. You have more than 10,000 SMEs जो खवातीन की जो कि घर से बैठे लिटरली जो है ना ई-कॉमर्स करा चला रही हैं. तो I personally think यार कि ये चलता रहेगा and we will obviously हम digitally तो हम progress करते जाएंगे, लेकिन क्या है कि we will always be playing catch up, right? As I said कि हम लोग देखो सही है, कोई चीज बाहर आ गई, हमने बाहर देख ली कैसे चलती है और हम यहाँ पे ले आए, लेकिन मेरे लिए मैटर ये करता है यार कि हम कोई चीज ऐसी लेके आए जो कि दुनिया के हाँ भाई यार हम तुमसे ये लेना चाहते हैं, वो चीज हमारे यहाँ है नहीं. और वो क्यों नहीं, क्योंकि हम R&D पे पैसा खर्च करते नहीं है, हम यहाँ पे स्कॉलर्स बनाते नहीं है, ठीक है. तो बात ये है कि हमारा जो अच्छा पढ़ा लिखा ग्रेजुएट, आइदर वो लम्स का है, IBA का है, वो तो बाहर जा रहा है. मतलब बिग परसेंटेज ऑफ दोज पीपल, लाइक स्पेशली इंजीनियर्स, मेरे कितने ढेर सारे इंजीनियर्स अभी इंजीनियर्स दो जर्मनी में बैठे हुए. वो क्या, उन्होंने मुझे बातें सुनाई पाकिस्तान में आके, लाइक कि भाई मैं तो पाकिस्तान आने नहीं दूंगा तुमको, तो पाकिस्तान आने का नाम लोगे. सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, ठीक है. तो मेरे कहने से मुराद ये यार कि we need to stop playing catch up. We need to obviously bring something of our own to the table. And at the end of the day मेरे ख्याल से मैटर ये करता है कि जब हम अपनी कोई चीज ले आएंगे तो then we could potentially say कि हाँ यार, लेकिन till we're playing catch up I don't think कि कोई ऐसा ड्रास्टिक हम कोई इम्प्रूवमेंट देख लेंगे. हाँ कंपनीज आ जाएंगी, थोड़ा बहुत हम बेहतर हो जाएंगे, but we'll still be here where we are right now. यानी कि फिर बेसिकली जो मैं आपकी बात समझ सका हूँ कि इट हैज टू बी कि वी हैव टू बी इनोवेटिव, वी हैव टू रियलाइज कि दुनिया में जाना है आगे. तो अच्छा, हम एक मैं पॉडकास्ट सुन रहा था, उसमें मुझे यही आइडिया जो आप दे रहे हैं ना, दो वी नो अबाउट द एट्रोसिटीज एंड एवरीथिंग दैट इजराइल carries out on Palestinians and everywhere. But you know, as a matter of fact, they're the leaders in app development. They're the leaders in data. They're the leaders in everything, dude. उनसे अमेरिका खरीद रहा है, Pegasus सॉफ्टवेयर अमेरिका खरीद रहा है इजराइल से. मतलब सही बात है. यहाँ पे हम क्या बात करते हैं यार, एक बंदे पे कर्जा कितना है, 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया पर बंदा हम पे कर्जा है, जो कि हमें पता भी नहीं है. एंड इजराइल का ये उनका जो मैट्रिक्स है अपनी ग्रोथ को मेजर करने का, वो ये है कि जो नैस्डैक वगैरह और या न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में कितनी कंपनीज पर पर्सन है. और मतलब इट्स लाइक 1800 के लिए एक कंपनी है, ठीक है, नैस्डैक में रजिस्टर्ड. तो मैं वही जो असल में बात जो कर रहा था वो ये थी कि एक ऐसा मुल्क जो सर्वाइव कर गया जिसमें कुछ भी नहीं, इट्स जस्ट डेजर्ट, और वो भी अगर सर्वाइव कर गया तो इट्स उनके रिसर्च जब मैंने की तो मुझे पता चला कि इलेक्ट्रिक कार्स का आइडिया, उसके बाद मतलब डेजर्ट फार्मिंग का आइडिया एंड इनोवेशन जो उन्होंने डिजिटल में लेके आए हैं, दैट इज द थिंग दैट मेक्स देम कंपल्सरी एवरीवेयर. हमें नहीं पता होगा कि इस वक्त हम बेशक कह रहे हैं और हर बंदा यूज कर रहा है फेसबुक, इंस्टा वगैरह, लेकिन इसमें कितनी कंट्रीब्यूशन है इजराइलीज की विद रिगार्ड्स टू इनोवेशन, विद रिगार्ड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोग्राम्स एंड ऑल ऑफ दैट. हम ये सोच भी नहीं सकते. तो आई एग्री विद यू ऑन दैट कि मतलब अगर पाकिस्तान ने अपना फुटप्रिंट मनवाना है, बीइंग द 6th और मे बी द 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द होल वाइड वर्ल्ड, it has to be with being innovative. 100%. So thank you so much, Hamza. I have loved the discussion so much. Honestly, I couldn't have expected. I'm very sure कि यार ऐसी discussion जो है इस point पे ना हो पाती. But I was like, मुझे पता था कि आप आ रहे हैं and you have always come up with quality work, always talked about creating value, being innovative. So really thankful for being with us.
and inshallah, and thank you very much to our audience, our viewers. I hope आपको फिर से जैसे मैं कहता हूँ कि value मिली होगी इस program से, and inshallah ta'ala we're gonna see you next week or maybe the week after next. Take good care of yourself. Allah Hafiz. Thank you. Bye.